Welcome back students in the maths class for standard 7. I am your maths teacher and without wasting further time, let's continue our maths chapter number 3 data handling and the question number 5 of exercise 3.1. In last video session we completed our question number 1, 2 and 3 in exercise 3.1. Now we are moving on exercise 3.1 question number 5. The question number 4 is the same as before, so we are going to skip. Now we are moving on question number 5. Following the table shows the points of each player scored in the 4 games. Now there is a 3 players are there and the 4 games will be played. Which game is that? There is no specific detail is given that there is which game is there, but there is a game which is played 4 times and the score of the 3 player is in the table. So एक प्लेयर का स्कोर फर्स्ट गेम में 14 था, सेकंड गेम में 16, इन थर्ड गेम 10 एंड द फोर्थ गेम ऑल्सो 10. सेम एज द बी प्लेयर 0, 8, 6 and 4 and the C player 8, 11, third game he did not play and the fourth game 13. So that's how the score is given. Now according to the score we have to give the answer of the question, which is the 4 questions are given. According to table we have to find out the answer. So the first question, find the mean to determine A's average points. So A के एवरेज पॉइंट हमको फाइंड आउट करने के लिए हमको उसका मीन फाइंड करना है. सो मीन ऑफ द A is equal to, what is the mean? Mean means the formula of the mean is sum of the total data divided by number of data. So here number of data is 1, 2, 3 and 4, so divide by 4. So what will be the answer? Say 14 plus 16 plus 10 plus 10. 6 plus 4 is 10. 1, 1, 2, 3, 4, 5. So 50 divided by 4. Again 6 plus 4 is 10. 0, 0, so 10 goes 0, 1, 1, 2, 3, 4 and 5. So 50 divided by 4. So further we can divide. Let's find out 50 divided by 4. So 4 ones are 4. Now 1 left, 0 goes down. 4 2s are 8, 4 4s are 4 3s are 12. So 12 is greater, so 4 2s are 8. 2 left. Now what I have to do? I have to put a point to make a 0 here. 4 5s are 20. 0 0. So 12.5 is your answer. So that is the mean score or mean point of the player A. Mean score of the player A. Now to find mean number of points C, mean number of points per game for a C, would you divide the total points by 3 or by 4? अब यहाँ पे मीन नंबर बी का सी का फाइंड करने के लिए हमको उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से या 4 से? सो यहाँ पे डेटा कितने हैं? 1, 2, 3. सो ऑब्वियसली आई विल डिवाइड. सो फर्स्ट का आंसर ये हो गया. सेकेंड का आंसर डिवाइड by 3. Why divide by 3? Because the game he played, the player C game play only 3 times. So we have available score is 8, 11 and 13. So we have data only 3. So the formula says sum of data divided by number of data. So sum of data कितने हैं? 1, 8 plus 11 plus 13 divided by कितने हैं data? 1, 2 and 3. So divide by 3. So that's why we will divide by 3. सो क्वेश्चन वांट्स टू से आप उसको कितने से डिवाइड करोगे तो मीन फाइंड करने के लिए. सो मीन फाइंड करने के लिए हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेटा हमारे पास 3 ही है, एक गेम उसने खेला नहीं है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मीन स्कोर ऑफ द बी. सो मीन स्कोर ऑफ द बी mean score of B 0 plus 8 plus 6 plus 4 divided by 4.
यहाँ पर कितने डेटा है, 4 डेटा है, 0 + 8 + 6 + 4, 4 डेटा का एडिशन किया, डिवाइड बाय 4. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एडिशन. 6 + 4 is 10 + 8, 18 डिवाइड बाय 4, 18 डिवाइड बाय 4. लेट्स डू दिस. 4 4 जा 16, 2 down, so 4 will put 4.5, 4 5 जा 20, so 4.5 is the mean score of point B, mean score points of B. To find the mean of B, यहाँ पे C के फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे B के फाइंड कर लिए. अब नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 सेज हु इज़ द बेस्ट प्लेयर. अब बेस्ट प्लेयर फाइंड करने के लिए C के भी मीन स्कोर फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो C के मीन स्कोर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आई विल राइट इट. मीन स्कोर ऑफ प्लेयर C इज इक्वल टू 8 + 11 + 13, 8 + 11 + 13 डिवाइड बाय 3, विच इज़ द आवर सेकेंड आंसर. कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा मीन स्कोर फाइंड आउट करने के लिए. सो 11 + 13, सो हियर 13, 11 and 8. So 8 + 1 is 9, 9 + 1 is 10 + 2 is 12, so 32. 32 divide by 3. Now we have to divide 32 divide by 3. So now the total is 32 divided by 3. So now 32 divided by 3 is 10.67. If you divide properly, you will find out the answer is 10.67. Now here we have mean score of the 3 player. Player A has a 12.5, player B has a 4.5 and player C has a 10.67. So who is the best performer? किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया? तो सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया था? प्लेयर A is the best performer here. Why? Because his mean score is greater than all of the players. See, B has a 4.5 and the C has a 10.67, but the A player has a mean score 12.5, which is the greater than others. So that's why the player A performed best in the 4 games. So that's all for the question number 5. Now moving on question number 6. Okay students, so now moving on our next question, question number 8, exercise 3.1. Now the other questions are similar, so I don't have to do on the board. The same question are repeating, so you have to do by yourself. Now the different question I am doing on the board. The rainfall in mm in a city on the 7 days of a certain week was recorded as follows. Now the days and rainfall. The days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. The rainfall on the Monday 0.0, Tuesday 12.2, Wednesday 2.1, Thursday 0.0, Friday 20.5, Saturday 5.5 and the Sunday 1.0. सो कोई एक सिटी है, नाम नहीं दिया हुआ है. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. देर इज़ अ वन सिटी विच इज़ नॉट गिवन अ नेम एंड वन अ वीक ऑफ द सिटी. कोई एक वीक लिया है और उस वीक में पूरा वीक रेनफॉल हुआ है. सो वो रेनफॉल का हमको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है. मंडे कितना रेनफॉल हुआ, ट्यूसडे कितना रेनफॉल हुआ, थर्सडे कितना, वेडनेसडे कितना रेनफॉल हुआ, थर्सडे कितना हुआ, फ्राइडे कितना हुआ, सैटरडे एंड संडे. सो दैट्स हाउ द रेनफॉल इज़ गिवन इन mm, मिलीमीटर में यहाँ पे हमको दिया हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू दैट डेटा वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. सो देर आर 3 क्वेश्चंस आर देयर. द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन अबाउ डेटा. यहाँ पे क्या करना है, जो कि रेनफॉल हुआ है उसका रेंज फाइंड आउट करना है. द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक. सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, मीन रेनफॉल फाइंड आउट करना है. एंड द थर्ड वन इज, ऑन हाउ मेनी डेज was the rainfall is less than the mean rainfall. अभी जो mean rainfall find किया है, तो how many days the rainfall is less than mean rainfall, मतलब mean rainfall जो find करते हो तो उसमें से कम कितने दिन पे आया है वो हमको यहाँ पे लिखना है. So one by one we will do that. So first of all range, I will find the range of rainfall.
range of rainfall is equal to highest minus lowest. So on which day the highest rain is there? On the Friday, 20.5, and the lowest rainfall is recorded 0.0 on the Monday and Thursday. So 0.0, so 20.5 minus 0.0, which is gives 20.5. So range of the rainfall is 20.5. Now the second question answer. Mean rainfall of for the week. We have to find out mean rainfall for the week is equal to what? Addition of total data 0.0 plus 12.2 plus 2.1 plus 0.0 plus 20.5 plus 5.5 plus 1.0 divide by how many days are there? 7 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So divide by 7. How many data? 7 data. So one by one we have to add it. So here I'll add this here. Zero point zero, then 12.2 plus here 2.1 plus 0.0 plus 20.5 plus 5.5 plus 1.0. So now what we have to do? We have to just do addition here. So 2 plus 1 3, 3 plus 5 7, sorry 3 plus 5 8, or here you can do directly 5 plus 5 10, 10 plus 3 13, 13 plus 1 goes here 4 5, 5 plus 5 10 plus 1 11, so goes carry 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, so 41.3 divided by 7. Now so 41.3 divided by 7. Now we have to divide properly. So यहाँ पर डिवीज़न करेंगे. अभी पॉइंट रिमूव कर दो, उसके बाद वापस वहीं पे लगा देंगे. सो पॉइंट डिवीज़न 7 1 जा 7, 7 7 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, or you can write like this 8 7 जा 56, so 56 is greater, so 7 5 जा 35. Now 35 में से 41 में से 35 जाएंगे 6, 3 goes down, so here 7 8 जा 7 9 जा 63 0 0, so here 5.9. So 5.9 is what? Is the mean rainfall for the week. Now we find out the mean rainfall for the week. Now the third question is on how many days was the rainfall is less than the mean rainfall. तो mean rainfall कितना है? 5.9. So 5.9 से भी कम कौन कौन से दिन पर रेनफॉल हुआ है? तो मंडे, फिर 5.9 से कम वेडनेसडे, उससे थर्सडे, फिर फ्राइडे उससे ज़्यादा है, सैटरडे भी कम है एंड संडे भी कम है. सो द मीन रेनफॉल was the rainfall was less on the days of Monday, Wednesday, Thursday, Saturday and Sunday than mean rainfall. So यहाँ पे 5 दिन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे जो कि रेनफॉल हुआ है वो मीन रेनफॉल से कम है. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8. दैट्स हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 8. सो दिस इज द फाइनल question of our exercise 3.1. Now in next video lesson we will continue with our exercise 3.2.
2. See, the question number 9 is related to same question number 5. So this is the same question you have to practice question number 9. Only the difference is a girl's height. So that's you have to find out. बाकी सब चीज़ें सेम है. So no need to do again and again. The video you have to watch. If you watch the video properly, then you will find out the answer. Now question number 8 done. Exercise 3.1 is also completed. So in next video lesson we will continue with exercise 3.2. Till then, thank you.